Good evening, ma'am. Good evening, Karamjit ma'am. Good evening, Amita. Good evening, ma'am. Good evening. Sorry, there was a glitch, so I could just connect earlier. No problem, ma'am. Today we'll be dealing with reading, speaking, and writing tasks. Okay, Okay. ma'am. Just give me a moment. We are waiting for the rest of. Good evening, Okay. ma'am. Good evening, dear. Uh, Good evening, ma'am. मेरे को ना एक बात बोलनी थी. जी जी कहिए. हेलो. या कहिए. मैम, अगर मैं स्पीकिंग और राइटिंग टास्क अभी कर लूं और जो रीडिंग है मैं वो पढ़ लूं तो था, क्योंकि लॉस बनना दिया सुबह तो सिर्फ ये जल्दी लेने आई ले थी. आया नहीं No issues, dear. We can do it that way. Otherwise, also reading, I'll be अच्छा, sharing मैं later. Sure. मैम. Yes, dear. ईश्वर मैम मैं उसको खुद कर लूंगी क्योंकि यहाँ पे नहीं है. कुछ network issues हैं. Okay, just give me a Ma'am? moment. Yes, dear. मैम तो असाइनमेंट नहीं आई आज की. हाँ जी, वो मैंने आपको बताया ना, जैसे नेटवर्क ग्लिच था तो मैं डाउनलोड ही नहीं कर पा रही थी. अभी बस थोड़ा सा एफर्ट्स करके आई हैव जस्ट डन इट, so I could just download it myself. That's why I could just share the assignment. ओके Can you मैम. guys मुझे see the प्रिंट screen now? करवा था इसलिए पूछ रही थी. Yeah, I got you. Yeah. ओके मैम. All right. Can you guys see the screen? Yes, ma'am. All right, cool. Smriti ma'am, you want to do speaking and writing first? यस मैम, मैं रीडिंग फॉर होम कर लूंगी. Okay. तो मैं आपको writing task I'll share in the group. श्योर मैम, श्योर. Just give me a moment. To begin with, this is the speaking. Can you see that? Describe a time when you were really close to wild animal. मैम मैंने ये किया हुआ है. मैं आपके लिए और I'll send one more for you. I think Amita ma'am ने किया हुआ है, यस मैम. है ना? So I'll share for Amita ma'am and Smriti ma'am. The rest of you, Rimpi ma'am and Karamjit ma'am, you guys please do this task and I'll ask you in a moment.
All right, what I'm going to do, I'm going to give you a different kind of questions. It will be a bunch of questions. Okay. Okay, ma'am. No problem. Just a moment. I found this pretty interesting, and this will really help you to give some quick wins. एक क्विक थॉट जो है ना वो हम ले सकते हैं. I'm going to share these in the broadcast list. All right, never mind. I'm not able to find my broadcast list, so I'm sending it in the group. Can you guys pick it up from there? Sure, ma'am. Okay, I have posted three cue cards. One I have posted a cue card, and another one I have posted some very quick questions. So tell me whether you want to go with the questions or you want to pick up the cue cards. अमिता मैम, स्मृति मैम, आप अगर क्वेश्चंस पिक करना चाहते हैं तो डोंट चेक, आई विल आस्क यू स्ट्रेट अवे. यस मैम, दोनों करवाने तो दोनों, नहीं तो क्वेश्चंस करवा दो क्योंकि क्यू कार्ड तो फिर प्रैक्टिस हो जाता है. Yes dear. So Rimpi ma'am, Karamjeet ma'am, are you ready for the cue card? Yes, ma'am. Who's going to go first, Karamjeet ma'am or Rimpi ma'am? Okay, let it be Karamjeet ma'am. Yes dear. Shall we begin? Yes, ma'am. Let's begin. Thank you for your cue card, ma'am. My cue card is a wild animal that I very close to it. People like animals. Most of the people like animals very much. Some like domestic animals and wild animals. Domestic animals commonly find in our homes, but it is there is very less chance to see wild animals. In my life, I saw a wild animal very close to me, and that was in my village, and the animal was elephant. And because in villages Mahavats brought elephants sometimes, and it was my childhood time that I saw that elephant very close to me. I felt very happy, and when I saw elephant very near to me, because I never ever saw this kind of a big animal very close, from very close. And I saw that some bells were tied in the neck of the
of elephant, and when the elephant walked, the bell was ringing, and the voice of the bells was very pleasant, and give a very gave a very happiness to our minds. And I one thing that I noticed, that the Mahavats gave sugar canes and liquor to the elephant to eat and drink. The elephant was very big, and I was a child, and I felt very excited to see such kind of big animal like Thank you, Karamjeet elephant. ma'am. Thank you, ma'am. Karamjeet ma'am, it was good. I'm giving you 6.5. Okay, ma'am. Thank you. Yeah, reason being, I could have given you 7 as well. You used one Hindi word, Mahavat, in it. Examiner Okay. may or may not understand the word. Oh, okay, ma'am. Okay, ma'am. Right? Ma'am, Because sorry. yeah. इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम महावत को? The one who trains elephant. ओके, Trainer. बिकॉज मैम मुझे याद था कि जब मैंने एक बार एक लेसन पढ़ा था, उसमें भी इंग्लिश में ही था बुक में, और महावत ही दिया था उसमें भी. I understand, but वो कैम्ब्रिज बुक्स नहीं होंगी ना. ओके ओके, ठीक है मैम. थैंक वो यू. इंडियन वर्जन बुक्स होंगी, Yes, सीबीएसई yes, बिल्ट अप yes. बुक्स होंगी, या पंजाब बोर्ड बिल्ट अप बुक्स होंगी. तो आप देखो ना, यहाँ पे तो वो चल जाएगा, बिकॉज Okay, अदरवाइज okay. Yes, ऑल्सो ma'am. डिक्शनरी में बड़े सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हिंदी ट्रांसलेटेड इंग्लिश वर्जन सेम रख रहे हैं. Yes. Right? लेकिन I'm not very sure that if the examiner, supposedly, if the examiner is some British or some English person, so probably he'll not be able to understand. वो उसी में घूम जाएगा कि अच्छा महावत बोला था, ये what is it? है ना? Yes, yes, You yes. know, we cannot afford to give any chance to our examiner to get confused. Yes, ma'am. Yes. Straight away बोलेंगे ताकि हमें straight away बढ़िया वाले grades मिले. जी. Rest was good, no issues about. Okay, ma'am. Thank you so much. All right. So, Rimpi ma'am, are you ready? Rimpi ma'am, Yes, ma'am. ready? Yes, ma'am. Let's begin. Well, I have always been interested in visiting different kinds of animals, but animals in India. But here I would like to talk about a animal that I saw closely. Around 1 year ago, I went to Wild Zoo, which is located in near my hometown. There are various animals, but I got fascinated by Indian deer because I had never seen in my life. I admired deer from distance of 9 to 8 feet. Deer has a 4 legs and a long tail, and white patches all over the body. One of the main reason why I like deer, because it has a reddish brown color, and so they seem really elegant. It has a horns on its head. It is herbivorous animal, so it eats grass, fruits, uh, leaves, and so on. Deer usually runs 60 to 8 kilometer, uh, and deer has an excellent hearing ability, which is not have other living beings. Also, deer produce a blunt sound. Um, these are only group of animals in the world to have antlers. So all of the reasons I like the deer very much, Thank you, Rimpi which ma'am. I saw closely. Rimpi ma'am, अच्छा था, बहुत अच्छा था. हालांकि I'm not very happy with the flow.
जो मैं जरूर चाहती हूँ कि आपका इम्प्रूव हो, एंड आई एम वेरी श्योर कि होगा, बट आई एम गिविंग यू 7 बिकॉज अनडाउटेडली फॉल्टलेस था, फ्लो अच्छा था, फॉल्टलेस था, लेकिन मेरे को फ्लो में और नेचुरलिटी चाहिए, और ज्यादा यू नो सम काइंड ऑफ मोर क्लोज टू द रियल स्पीकिंग चाहिए, समथिंग वेरी नेचुरल, Okay, ma'am. राइट? Thank you. Take your pauses in between if you want to heighten up your voice in between, lower down your voice in between. There should be excitement when you say that I am really excited. I was really excited to see the antlers, or I was really excited to see the Indian deer. Yes, है ना, ma'am. कुछ एक्साइटमेंट होना चाहिए आपकी वॉइस में। अगर अगर कुछ सॉरो वाला बात है तो उतना डाउन जाना चाहिए आपकी आवाज, थोड़ा सा Yes, ड्रामेटिज्म, ma'am. थोड़ा वो पहले डाउन होता है फिर अप ही रहता है, ऐसा सा। होता है टोन में। रिम्पी मैम अच्छा था आज, काफी काफी अच्छा था मस्त से। मैम एक पूछना था वर्ड हर्बीवर्स मींस प्रोनाउंसिएशन क्या थी, हो सकती है HERBIVORES। हर्बीवरस, हर्बीवरस। थैंक यू मैम। आई एम सॉरी, करमजीत मैम का भी ना एक प्रोनाउंसिएशन किसी एक वर्ड का कुछ गड़बड़ था, जब मैं सुन रही थी तो मैंने सोचा था मैं जरूर बताऊंगी, बट लेटर इट स्किप्ड आउट ऑफ माय माइंड, but I'll re-listen to your recording and I'll surely share with you, ma'am. Okay, so Okay, ma'am. yeah, Amita ma'am, are you ready? Yes, ma'am. All right, cool. I'll not be able to record you because if I'll read, recording will go down. No If problem, you ma'am. guys want to record yourself, kindly do that. But I'm going मैम to, हमें क्यू कार्ड करना है कि वो क्वेश्चंस ही हैं सिर्फ? Smriti ma'am, I'll be asking you some quick questions. ओके श्योर। Otherwise, वो क्यू कार्ड भी है, आप उसे क्रिएट करके मेरे को सेंड कर दीजिएगा, I'll check. श्योर श्योर श्योर। Okay, so Amita ma'am, what do you think of people using calendars to remind themselves of things? Okay, according to me, it reminds me that thousands of years ago, people already discovered the pattern of time and seasons. And however, calendar, we know, I mean, currently a calendar, I think it is very important to remind us about these social events. All right. Should one update oneself with new organizational skills? Why? Well, according to me, yes, definitely. और जाना था नहीं It is very important to be organized and structured about I mean everything, whether you are working or whether you are doing your education. It is very important because I think it goes step by step, and with the structured I mean with the structured term, we learn new things. All right. Is there any difference between men and women while they choose their clothing? Clothing. Yeah. I think yes, there is a difference. Like female prefer a different type of clothing. Like for example, I'm a female and I prefer my clothing. It depends on the I mean. Basic taste of a person. Yes, the basic taste of a person. Like I prefer ethnic, and as well as I mean working out, then I prefer to wear a sports clothes. Fine, fine. In what ways young people see fashion differently than older people do? Well, I think now as I see that there are a lot of online shopping applications are available, and people are more aware about the fashion and they are more concerned about the fashion.
So there is a lot of difference between in the past years, because previously there were no more accessible. The people do not have more access to see the current fashion, but these days we have more accessible There are things. more of options also. Yes, there are more options in these days. Do you students learn maths in secondary school in your country? Do students learn secondary maths in secondary school in your country? I'm sorry, ma'am. In your country, Mhm. students learn maths in secondary schools as well. Is it true or not true? Yes, basic mathematics is they are available in the secondary schooling, because in the schools the basic mathematics, like a very base of the maths. Teacher. I think maths as a subject is there in your country. Yes, Maths as a it subject is is there in your country till secondary level. And right now they have segregated in two parts, like it is on the will and on the capacity of a student, interest of a student, that they have segregated. The students who do not want to take maths further onwards, they can take basic mathematics and till 10th. And the students who want to continue mathematics further, like if they want to do super medical, or if they want to do non-med, then, or maybe they want to take medical it's in their choice to. yeah, it's their choice. They can take standard maths in 10th. So in case they Okay. ask you something like this, you Mhm. can twist it to this, right? Okay, ma'am. Okay. Do you think what people wear can affect their mood? I personally think that yes, if we wear, more uh, if we wear according to the event, then I think it affects to the other people as well, because they will consider you as a, if I am giving an interview and I prefer to wear a formal dress, then of course it will impact positively to the interviewer. All right. Thank you so much, dear. Thank you. Thank you, ma'am. I recorded partially and I'm sharing it with you. Okay, ma'am. Thank you. Ma'am, any feedback, because this was the first time of mine to deal with the quick नहीं, questions. ठीक था Okay. बीच में कहीं एक दो जगह पे टेंसेस का एरर था, जहाँ पे Okay. डिड के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपने लगाया वो गलत था. The rest Okay. everything was good. Okay, Rest ma'am. answers were very subtle, very quick. बस एक वो मैथ्स वाला क्वेश्चन शायद क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया था, तो इसलिए. Yes, ma'am. Yes, है ma'am. ना? उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन सिर्फ confusion हो यही गया था दैट इज यहाँ पे क्वेश्चन जो लिखा है वो द फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन इज इनकरेक्ट आई थिंक. यहाँ इन्होंने लिखा है डू यू स्टूडेंट्स लर्न. Yes, अच्छा, ma'am. ये शायद स्टूडेंट्स का, जैसे आप एकेडमिक्स के लिए जा रहे हो तो वो ये शायद पूछ रहे हैं विदाउट एनी पॉज दे हैड गिवन. सो इफ विद पॉज आएगा, डू यू स्टूडेंट्स लर्न मैथ्स इन सेकेंडरी स्कूल in your country? Okay. Do students learn maths in secondary schools in your country? तो इस क्वेश्चन में we can always twist कि maths तो होता ही है, but now they have ease of, for the students who do not want to take maths further, they can take basic maths, and the students who want to take maths further, they'll be doing Right, ma'am. Got it, ma'am. yeah, It is means optional, standard maths. not Yeah, compulsory. Rimpi ma'am, it's for 10th. Yes, ma'am. Compulsory. I mean, नहीं, मैथ्स For एज सच students. कंपलसरी है, मैथ्स एज सच कंपलसरी है, बट सीबीएसई ने ईज ऑफ कर दिया है कि अगर आप चाहें तो 10th का मैथ्स अगर आप नहीं आगे करना चाहते कंटिन्यू, जैसे आईसीएसई बोर्ड ने किया हुआ है, वैसे ही आपके लिए अगर आप नहीं मैथ्स आगे कंटिन्यू करना चाहते तो आप इसको आराम से बेसिक मैथ्स कर लीजिए सफिशिएंटली इनफ. वहां पे वो सिंपल क्वेश्चंस देंगे, बहुत टिपिकल थ्योरम्स एंड ऑल दैट वो नहीं देंगे. And
one more thing, ma'am. I mean, if we see the south area, there's I mean, after 10th, they usually do their college. They join their college. Yeah, they do. They do join the college. They Yes, have a ma'am. different setup. Yeah. Yes, ma'am. तो उसमें भी maths ma'am, is not compulsory. It's their it's the Yeah, student's yeah. वो choice. तो 10th के बाद तो वैसे ही you do not have any compulsive subject ना. Right, ma'am. बेसिक Hmm. सब्जेक्ट होता है जो Ma'am, आपका बेसिक लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है इंग्लिश, वो है कंपल्सरी. अपार्ट फ्रॉम दैट तो इट्स योर चॉइस. Right. यस या yes, yes, ma'am. Means PSEB board और CBSE board means उनके लिए compulsory नहीं है after नहीं नहीं. secondary. Yes, ma'am. यही आफ्टर टाइम बोल सेकेंडरी. सकते हैं. हाँ जी. After secondary means यहाँ पे compulsory नहीं पूछ है. रहे थे Means सेकेंडरी तक. आफ्टर सेकेंडरी नहीं पूछ रहे, सेकेंडरी तक का पूछ रहे, वो 10th 10th तक का yes पूछ मैम रहे. वो यस मैम 10th तक मींस कंपल्सरी है ये तो उसके बाद मींस ऑप्शनल है ये लाइन बोल सकते हैं मींस जी 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 बिल्कुल बिल्कुल. All right. So, Samriddhi ma'am, shall we begin? Sure, ma'am. Okay, let's begin. All the best. Okay, Smriddhi ma'am, how do you celebrate New Year? I celebrate New Year every year with my family. We used to get together with our relatives, families, have a dinner together, and desserts only. This way we gossip a lot, we giggle around. This is the way we celebrate New Year every year. Any particular ceremony that your family specifically uh, does every year? Some ritual that they do every year on New Year. I don't name it as a ritual, but yes, a ceremony like we go on the first day of the year, we go to our religious place just to pray to God so that the beginning of New Year would be great, so that we can start fresh. So can we do a fresh start? So it's just a prayer to the God in some religious place. That's it. Why do people think New Year is a new beginning? Even I think so, because it's a fresh start for every resolution we take on that day. Uh, leave behind everything we have done in our past. We are full of a year full of new tasks, new beginnings. So I assume the fresh start on the very first day is a new beginning. What kind of trees do people usually plant in your country? In my country, people usually plant trees which give them food, like fruits, or which may give shelter to different types of animals, uh, and also the one who hygiene our roads. These types of trees they usually plant. Okay. Have you ever planted trees? Not much, but in my school days, there was a rule that once in a year on our birthday we had to plant a tree as as a reminder of our birthdays in the school. So in my school days, I had planted many of trees on my birthday and on my brother's birthday as well. Do you often get up early in the morning? And I'm not day person, so I don't wake up early in the morning. I'm the night person because I'm doing the my professional work also in the night shifts. Okay. Do you get up early on the weekends? Sorry, Do you get up early on the weekends? I think weekends are the only days which I can wake up late in the morning so that I can enjoy my sleep in the bed, my food in the bed. So not even on the weekend I wake up early in the morning. Which morning do you like the best in a week?
the Saturday morning because that is a day off from the office. All right. Thank you so much. Prompt and nice, I must say. It was a good one. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. गुड। पता है क्या है, एक बड़ी सीधी सी बात है, कीप इट इन माइंड, जितना नेचुरल हो के आप आंसर दोगे ना, बिना बिना किसी भी टेंशन के, उतना हमारा आंसर सही जाएगा। यस Trust मैम, मुझे मुझे ना क्वेश्चन आंसर राउंड ऐसा लगता है कि अब इजी लगता है और क्यू कार्ड से ज्यादा इजी लगता है, मुझे लगता है और मैं यही नहीं, pick क्यू कार्ड करूंगी। भी इजी ही लगेगा, सच में बोल वो रही भी हूँ, मैम यस, मैं उसको बिल्कुल टेंशन नेचुरली लिए ना बिना। अपने नहीं नहीं, मैं उसको अपने लाइफ एक्सपीरियंस ना रिलेट हाँ, करती हूँ, तो वो रिलेट बहुत कर, इजीली बोल हो जाता है। एग्जैक्टली। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। Gurpratap sir, you joined and you left in between. I can understand. Like, is it some network glitch or something? Please, in case there is some, try joining in once again because we have to begin up with our reading. Thank you. All right. Actually, Gurpratap sir had joined in between and somehow I saw him leaving. Okay. So this is it for the speaking. Any queries? मैम ये जो है क्वेश्चन आंसर ऐसे जी। और भी है आपके पास, तो कैन यू शेयर इट इन द ग्रुप? Decidedly. दो तो मैंने स्लाइड्स आपके साथ शेयर करी ही हैं, आगे भी मैंने बहुत सारी करी है, and I'll keep sharing for sure. यस मैम, आई थिंक ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्यू कार्ड से। इंटरेस्टिंग तो है, बट आएगा तो दोनों ना, क्यू कार्ड भी आएगा, Right, ये ma'am. भी आएगा। All right. So Smridhi ma'am, this is the writing task for the day, and everybody, this is the writing task for the day. In recent years, the family structure and the role of the members are gradually changing. What kind of changes can occur? Do you think these changes are positive or negative? Or आएगा positive and negative, नहीं positive or negative. मुझे मैम क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं आया। आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार और पढ़ो, वहां कोई नहीं बताने आएगा ना। आई एम देयर टू सपोर्ट यू, बट बहुत इजी क्वेश्चन है, रिलेट करके देखो खुद से, रिलेट मैम लाइक करके देखो अपनी न्यूक्लियर फैमिली से। फैमिलीज और जॉइंट फैमिलीज पे है। आप इसको ये भी कह सकते हैं, आप ये देखो कि आपके जब आप छोटे थे और अब ओके, फैमिली स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो गए हैं। यस यस यस। I fairly remember when I was young, I was living in a joint family. Like 3 families were living together, around 11 kids there. तो क्या हमारा जो चाइल्डहुड था वो कैसा था? And right now when I'm there, I'm living in a nuclear family, 2 kids only at home. One is there, one's not there at home at times. So no one to share things with, no one to share joys and sorrows around. तो कई चीजें मिसिंग है, कई चीजें अच्छी भी हैं, पर मिसिंग भी बहुत कुछ हो रहा है। तो ट्राई टू रिलेट, क्वेश्चन को अपने से रिलेट करके देखो, चीजें अपने आप बहुत इजी हो जाएंगी। स्ट्रक्चर करिए क्वेश्चन को, व्यूज अपने थोड़े से जॉट डाउन करिए, एंड आई विल गेट बैक टू यू इन अनदर 5 minutes. क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम, चेंजेस में ये भी आ सकता है कि मोस्टली पीपल लाइक टू लिव इन अब्रॉड। रिम्पी मैम, ये भी आ सकता है, people they most of the people they like living abroad. Okay, लेकिन क्वेश्चन को बहुत ज्यादा आउटस्कोर मत करो, उसको देखो कि क्वेश्चन क्या है। इन रिसेंट इयर्स द फैमिली स्ट्रक्चर एंड द रोल ऑफ मेंबर्स आर ग्रेजुअली चेंजिंग। फैमिली स्ट्रक्चर को देखेंगे, फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। सेकेंडली रोल ऑफ मेंबर्स चेंज हो रहे हैं। सबसे पहले अगर हम फैमिली स्ट्रक्चर की बात करें तो हम बेसिक बॉडी पैराग्राफ 1 में हम जो आप न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली की बात कर रहे थे, हम उसको पिक कर सकते हैं, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर मिल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है रोल ऑफ इट्स मेंबर्स आर ग्रेजुअली चेंजिंग। पहले क्या था, लेडीज यूज्ड टू स्टे होम एंड फादर्स वर द ओनली ब्रेड अर्नर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स। I'm not saying always, but most of the times अगर हम देखें अपनी ग्रैनीज को, तो हमारी ग्रैनीज जो थी वो they were homemakers, है ना? And they were very good homemakers, far 1,000 times better than us. लेकिन अभी अगर हम देखते हैं तो women today, she is multitasking, she is going out, she is working, she is coming home, she is taking up responsibilities, she is actually handling so many things.
तो ऑब्वियसली रोल ऑफ मेंबर्स चेंज हुआ है. रोल ऑफ मेंबर्स चेंज होने से डिसीजन पावर आगे वुमेन के पास कम थी, अब ज्यादा है. मैं ये नहीं कह रही कि आगे नहीं थी, बट आगे कंपैरेटिवली कम थी, है ना, क्योंकि अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मिलने होने से वो थोड़ा सा उसमें डिसीजन पावर का भी एक पॉइंट आ गया है. What kind of changes have occurred आना चाहिए, क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, तो प्लीज काइंडली एडजस्ट. What kind of changes have occurred? Do you think these changes are positive or negative? I'll see if I can just edit it a bit. मम्मी इसमें तो फिर एक पॉजिटिव चेंज है, एक नेगेटिव है. पॉजिटिव है और नेगेटिव है. नेगेटिव कैसे है? मीन्स न्यूक्लियर फैमिली वाला हो गया जो. न्यूक्लियर फैमिलीज वाला नेगेटिव है. देखो, अगर आप पॉजिटिव लेना चाहते हो या नेगेटिव लेना चाहते हो, इट्स ऑल ऑन टू यू. जब हम जॉइंट फैमिलीज में थे तो शायद बहुत बार जो छोटा था उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली नहीं जाती थी, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी कोई बात समझ में ही नहीं आती थी, उसको लगता था ठीक है बड़े हैं कर ही लेंगे. जैसे ही न्यूक्लियर फैमिलीज में आने शुरू हुए लोग, तो उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आया. तो जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियर फैमिली जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट ही देती है, उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बहुत बार होता है. इफ यू गो अब्रॉड तो वहां पे दे हैव अ ट्रेंड, लाइक after son gets married or after the daughter gets married, they really want them to live separately. They want them to have an independent life, uninterrupted life, so as they may learn to take decisions, financial and otherwise also. सारा टाइम ही वो डिपेंडेंट अगर रहेंगे तो वो अपने डिसीजंस खुद लेना कब सीखेंगे? People became independent and good decision maker. एग्जैक्टली तो ये दोनों तरीके से है. आप किस तरीके से लेना चाहते हैं, दैट्स ऑल ऑन टू यू, Yes, ma'am. राइट? इज दिस ओके? Yes, ma'am. Tell me whether the question is fine with you now. Good evening, Priya ma'am. I hope you're good. Yes, ma'am. Good. Your Good daughter evening. is fine, dear? Yes, ma'am. Now it is. She's fine. Okay. Priya ma'am, we were discussing, we just had us speaking, and this is the writing task for the day. Okay, ma'am. Just read out the question, and in case you have a query, please ask. And I've given 5 minutes for the introduction. Okay, ma'am. Ma'am, what about my speaking? Ma'am, you will take हो my जाएगा speak- प्रिया मैम. I have shared the cue card in the group. Otherwise, अगर आप चाहें तो आप रिकॉर्ड करके सेंड कर सकते हैं. I can share the feedback. Else, if you want, I can directly do the speaking. Ma'am, actually, I just want कि आप मेरी speaking जैसे कल मेरी speaking है तो आप मेरी speaking जैसे उस दिन ली थी आप ऐसे- Definitely. Okay. आप ये complete कर लीजिए. Then I'll do the speaking. Okay, ma'am. मैम मैंने इंट्रोडक्शन तो लिख लिया है. Okay. तो आप कहो तो मैं आपको एक बार बता दूं. Definitely. Go ahead. Okay. Family plays a vital role in everyone's life since the day we born. Nowadays, the creation of nuclear families has stressed up our mental peace in comparison of the joint families. This has impacted negatively, which will be discussed in the below paragraph. Fine, dear.
I think it's pretty good. अभी आगे आप कैसे करेंगे? That is again one big thing, no? मैम मैं इसको और वही जो आपने वो वुमेन वाला बताया, मैं उन दोनों को इलाबोरेट कर देती हूँ. Okay, dear. मैम इसमें मैंने थोड़ा सा डिफरेंट लिखा है. Like it is true that these days family structure and role of its members are significantly changed. The role of men and women have become similar in these days. Women also doing the same work as men. However, in the past, only man was responsible for family daily bread. I think that this change has become beneficial for the entire family. Okay, dear. Fine. Fine. And you will justify it properly with the In the next different. paragraph, I'll Yeah. do that now. Okay. Fine. The rest of you, if you have written something, please do share with me. Yes, dear. Have you guys written? Yes, ma'am, लिख रहे हैं. Okay. Yes, dear. Are you done? Yes, dear. Are you guys done? Please let me know if you are through with this. Just the introduction. That's it. Ma'am, Yes, should ma'am. okay, it is universally accepted that family got short with the passage of time. Now individuals prefer nuclear family. This has adverse effect on the society.
My views are enlisted in the upcoming paragraphs. Okay, brief and pretty fine. Yeah. All right. Thank you. रिम्पी मैम, Yes, मैम ma'am. लिख लिया मैंने. हाँ जी, प्लीज शेयर करेंगे. Family plays a great role in everyone's life. It has been seen for some years that the formation of families and the part of its members are changing during the time. In my opinion, there are some positive and negative impacts of this interest. In this paragraph, we will discuss about it. Okay, dear. Fine. मैम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं. हाँ जी, दोनों हम फ्लिप कर सकते हैं, बट कोशिश ये करेंगे कि अगर हम कोशिश करेंगे कि अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहने देंगे. नेगेटिव है तो आप नेगेटिव पे ही बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं. हाँ, अगर उन्होंने क्वेश्चन में ही ये पूछा है कि ओके मैम, डिस्कस बोथ द इसमें व्यूज, जो वो पूछ सकते हैं. Yes, ओके मैम इसके अंदर जैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ओके दोनों ही कर सकते हैं. ओके और होता तो वी हैव टू गो वन साइड. यहाँ पे ना, यहाँ मैं वही आपके आने से पहले यही बात करी थी प्रिया मैम. यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत है. डू यू थिंक दीज चेंजेस आर पॉजिटिव और नेगेटिव आना चाहिए. ओके अदरवाइज ये क्वेश्चन करेक्ट नहीं हो रहा. डू यू थिंक दीज चेंजेस आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव और नेगेटिव इकट्ठे नहीं हो सकते ना. ओह यस मैम. Either it will be positive or it will be negative or it will be a partial. बट मैम Positive as well as negative. ओके बट मैम अकॉर्डिंग टू टॉपिक, जैसे टॉपिक ये है न्यूक्लियर फैमिलीज पे, बट कुछ इसके बेनिफिट्स भी हैं, कुछ नेगेटिव्स भी हैं, तो मैम अच्छा, आप partially दे सकते हैं. पार्शली दे सकते हैं इसमें. जी जी ओके जी. मैम फिर पार्शली के अंदर 70-30 का रेशियो रहता है या 50-50 का रहता है. नहीं, आप 50-50 का रखेंगे तो फिर partial नहीं होगा ना. ओके तो पार्शली मैम मीन्स आप बॉडी पैराग्राफ, पार्शली का मतलब है हम बॉडी पैराग्राफ उसको उठाएंगे जो हम नहीं देना चाहते ज्यादा. बॉडी पैराग्राफ 2 हम वो लिखेंगे जो हम ज्यादा देना चाहते हैं, ताकि हम कंक्लूड उस पे कर सके जो हम देना चाहते हैं. ओके मैम. है ना. वो हमारा बॉडी लेंथ जो है वो थोड़ा सा रेज अप कर देगा, वो थोड़ा सा बढ़ा देगा. मैम अगर हम पार्शियल होंगे तो मैम उसकी एक थीसिस स्टेटमेंट क्या होगी मैम, अगर आप Did I बता दो. partially agree? Obviously. इसके अलावा क्या हो सकता है? नहीं मैम जैसे In the स्लाइडली upcoming, yeah, in the upcoming paragraphs or in the upcoming content, I'll be sharing my views partially. I I'll will be be sharing. voicing out my views partially. Ma'am, could you explain it again? Ma'am, see. I will be sharing my views. Yeah, I'll be voicing out my views or I'll be sharing my views. Okay, I will voicing out my views On the topic on the topic in the following. In the following paragraphs. Yeah. इससे पहले आप लिख सकते हैं that I'm partially in favor of, जो भी चीज आप लिखना चाहते हैं. Okay, I am partially in favor of the phenomenon. Exactly. Yeah. लेकिन मैं ये कोशिश करूंगी, अगर मैं अगर as an aspirant if I'm there, तो मैं कोशिश करूंगी कि जब तक मेरे को वो पूछते नहीं कि give both the viewpoints, तो मैं तब तक कोशिश करूंगी कि मैं एक ही व्यू पॉइंट को लेके चलूं. Okay, मतलब अगर Flip ना पॉजिटिव है. Okay मैम. मेरा मैम, फर्स्ट मैंने प्रेफरेंस ये रहेगा कि मैं फ्लिप ना करूं. ओके क्योंकि मैम कहीं ना उसमें हम सेफ जोन में नहीं रहते, वो उसमें कहीं ना अच्छा, कहीं एक डाउट बात और है. नाउ यू आर डिस्कसिंग इट विद मी, तो एक चीज और मैं शेयर करना चाहती हूँ. देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जहाँ पे आपको पॉइंट्स ज्यादा नहीं मिल रहे हैं. ओके मैम. जहाँ पे आपको आइडिया ज्यादा नहीं आ रहे हैं, और क्वेश्चन ऐसा है कि इज इट अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव चेंज. आपके पास कुछ एक पॉजिटिव है, कुछ एक नेगेटिव है. बहुत ज्यादा पॉजिटिव और बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है, जिससे कि आपको लेंथ बनाने में मुश्किल आ रही है. तब आप पार्शियली वाला पिक करो. ओके मैम. क्योंकि हमने एटलीस्ट 250 का लेंथ तो कवर अप करना ही है ना.
हाँ जी मैम, हाँ तो आप उस टाइम पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लो, लेकिन उसमें स्ट्रेटेजी यही प्लान आउट करेंगे कि हम वो ज्यादा लेंगे जो हम जो जिसके पॉइंट्स हमारे पास है उसको हम सेकंड लास्ट रखेंगे, ताकि हम उसे कंक्लूजन में ला सके। मैम जो इंट्रोडक्शन थी मेरी, इट वाज फाइन, मतलब ऐसे ही अगर मैं मतलब अटेम्प्ट करूँ तो। या इंट्रोडक्शन हो सकता है। ओके मैम, थैंक यू। मैम मैंने कर लिया, मैं आपको बता सुना आपने ओके स्मृति मैम। ओके। मैंने इंट्रोडक्शन तो बता रही थी, तो आगे लिखा था टू कमेंस विद इन ओल्ड फैमिलीज देयर वाज इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेनी पीपल्स एट द सेम टाइम वेदर in old families to commence with in old families there were आएगा या there was आएगा? there were फैमिलीज की बात कर रहे हो तो वर आना चाहिए ना। sorry yes ma'am there were ये थोड़ा सा involvement खुद of ही ध्यान रखेंगे बिकॉज इट्स दीज आर वेरी वेरी सिली मिस्टेक्स, मतलब इसके करके तो बैंड बिल्कुल भी डाउन नहीं जाना चाहिए। okay ma'am sure there were involvement of many people at the same time. Rather, it would be some decision to be taken or some events to be planned. But on the other hand, in today's nuclear family, there are usually 4 members who are living together in a family. In some scenarios, children move out of the nest for the job or work reasons, which left parents alone in the home. Secondly, in the early days, there was a trend in most of the families that women remained at the home and look after each and every इन द task by their अर्ली own. डेज आएगा या इन द ओल्डन डेज आएगा? और मतलब और क्या ओल्ड एज पता नहीं। ओल्डन डेज ओके मैम ओके but nowadays women became the multitasker from they have become आएगा ना, has have had के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। become होती है yes sorry become the multitasker from looking after the home and the kids to work at the office at the same time is also come with a unique scenario. Overall, family structure these days have affected the lifestyles of every person, and people might find themselves alone sometime due to less involvement of people around them. So we can't deny the fact that it has impacted negatively on everyone's life today. ओके स्मृति मैम, कंक्लूजन? मैंने कंफ्यूजन बताया था ये लास्ट नहीं नहीं, मैं समझ गई आपने कंक्लूजन बताया था। मैं ये कह रही हूँ कि कंक्लूजन नहीं, मुझे मतलब बड़ा अब्रप्ट सा लगा। मैंने फिर यही जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था उसी को आप मोल्ड खुद अपना कंक्लूजन बाद में एक बार रीड करके देखिएगा, यू विल गेट टू नो कि बहुत अब्रप्ट है। ओके ओके मैं इसको फिर चेंज हाँ, करके इसको दोबारा थोड़ा सा हम प्रॉपर वाइंड अप करेंगे। श्योर श्योर मैम आप मुझे इसका मतलब आंसर भेज दोगे एक बार हाँ जी, I'll send. No issues. I'll send it. For the rest of you, can you share your answers with me later? Yes, ma'am. Can I share? Yeah, sure. No issues. सॉरी मैम मैं लीव कर सकती हूँ सो हाँ जी, sure, no issues. ओके थैंक यू मैम Bye, take care, God bless. थैंक यू मैम Okay, so we have actually a reading today and it's already 8:05 right now as I can see on my clock. Suggest me, shall we just do a bit of reading? And I'll be sharing the reading in the group as well. We'll be doing 2 readings today and 2 will be the home task. All right? Is this okay, everybody? Yes, ma'am. Okay, go ahead. This is the first reading for the day. After this, Rimpi ma'am, no, Priya ma'am. Priya ma'am, are you there? Yes ma'am, yes ma'am. Yes, dear. After these 2 readings, I'll be picking up speaking with you. What Okay. time is your exam tomorrow? Ma'am, 9:40. Okay, fine.
मैम ऐसा कुछ मैम ये मिथ है क्या कि सुबह का एग्जाम टफ होता है और शाम का ऐसा इजी कुछ होता नहीं है? है, ऐसा कुछ नहीं है। कीप योर कूल प्लीज, कीप योर कूल। ओके मैम। सब ठीक होगा और सब ठीक होता है। दे आर वेरी वेरी फ्रेंडली पीपल, दे आर वेरी वेरी फ्रेंडली पीपल। जस्ट कीप अ स्माइल ऑन योर फेस एंड कीप योर कॉन्फिडेंस अप, थिंग्स विल रियली गो गुड। बहुत कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन के जाना, बहुत ज्यादा फॉर्मल अटायर में मत जाना, वो आपको अनकंफर्टेबल करेगा। ओके ठीक है, मैम। गो मैम विद योर कंफर्ट। हाँ, मैम सूट भी हो सकता है? या व्हाई नॉट, व्हाई ओके नॉट। मैम, इट कैन बी जीन्स और जीन्स वगैरह होनी चाहिए या नहीं? ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। डू नॉट गो इन अ वेरी टाइट फिट क्लोथ्स बिकॉज दैट विल ओके गिव यू एन अनकंफर्टेबल फीलिंग। वो बैठने उठने में आपको दिक्कत आएगी, वो एक अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए। whatever you will wear, make sure that you are very comfortable and confident in that. You can carry it confidently. आप चाहे वेस्टर्न वियर पहनो या इंडियन वियर पहनो, अटायर पहनो, वो कोई दिक्कत नहीं है। whatever should be comfortable. Wear it with confidence. Yeah. ओके मैम। Ma'am, I'm taking it as a homework, the reading Okay, task. Amita ma'am, no issues. I'll be sharing reading with you guys within 20-25 minutes. No problem, Easily. ma'am. Yeah. Thank you so much, ma'am. Take care. Okay, Bye. dear. God bless. Bye bye. करमजीत मैम, रिम्पी मैम, इफ इट इज ओके विद यू गाइस, तो क्या मैं ये रीडिंग आपके साथ शेयर कर लूं ग्रुप में? एंड राइट नाउ क्योंकि प्रिया मैम का एग्जाम है, तो कैन वी जस्ट पिक अप स्पीकिंग विद हर वंस? Yes, ma'am, no problem. Okay, cool. Priya ma'am, just get ready. I'm going to ask you a few questions. Okay. Cue card मैंने आपको पहले ही ग्रुप में दे दिया है. Pick up the Okay. same cue card. Take 60 Okay, ma'am. seconds to prepare for that. And after 60 seconds dot, I'll begin up with the introduction. Okay, ma'am. Ma'am, can we leave? Karamjeet ma'am, it's all on to you. If you want to stay, kindly stay. You will get an experience as how it is. And if you want to leave, your wish. No issues at all. Oh, okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you. Okay, ma'am, then I want to leave. Ma'am? Yes, dear. Ma'am, may I leave? Hanji, go ahead. No worries. You Okay, can leave. thank ma'am. Yes, Priya ma'am. Shall we begin? Yes, ma'am. Cue card is with you. Please begin up. Okay, ma'am. Okay, should I start with the cue card? Yeah. No worries. Okay. Go ahead. Okay. I have visited many places when I was a child, but here I would like to talk about a famous place and which is very close to my heart. That is Vaishno Devi. It is approximately 600 kilometers from my hometown, and it was the day of my birthday as well. And we planned for a trip, uh, and we went there with the help of vehicle, and me, my dad, my mom, and my brother as well. We all were sit together in a car, and at the time we was very happy. We were very happy, and there was a place which name is Rishikesh, and uh, mm, the place is very awesome, and I did some river rafting and different types of activities when we reached there.
And I was the one who was excited because my birthday was there, and I was very happy because my dad planned a lot for my birthday. And then when I reached there, there was when we reached at the hotel, there was a surprise for me, and there was a birthday cake, and I felt over the moon at that time, and I can see the happiness on the face of my parents as well. And after cutting the cake, we went for Vaishno Devi temple, which is one of the religious temple of Vaishno Mata. And then we when we went there, I want to share some incident with you. At that time, I was scared. I was little bit exhausted due to the distance of traveling. But but anyhow, I have to reach to the particular place in the shrine of Mata Vaishno Devi, and finally we reached there, and we did some worship over there, and Thank afterwards you, Priya when we ma'am. went. Okay. All right, I'm going to begin up with the introductory, that is speaking part 1. Could you Okay. please tell me your full name? My name is Anupriya, and you can call me Anu as well. फर्स्ट थिंग फर्स्ट एरर, यहाँ पे जब मैंने आपसे आपका नाम पूछा है तो आप सिर्फ अपना नाम बताएंगे. ये नेक्स्ट क्वेश्चन था एग्जामिनर का, व्हाट शैल आई कॉल यू. ओके मैम. तो उतना अब मैं आपको क्यों टोक रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज उतना ही आंसर दीजिए जितना एग्जामिनर पूछ रहा है. यहाँ तक के जो क्वेश्चंस हैं ये 1-to-1 विद एग्जामिनर होंगे, और ये क्वेश्चंस जो है गिव वेरी शॉर्ट फैक्चुअल आंसर्स बिकॉज दीज विल नॉट बी असेस्ड. ओके मैम. अगर मैं आपका नाम पूछ रही हूँ तो यू विल जस्ट गिव मी योर नेम. ओके मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शैल आई कॉल यू. You can call me by my first name, that is Anu. Can you tell me where are you from? Yes, I live in Fatehabad, which is approximately 400 kilometers away from the national capital of India. Can I please see your identification? And after that, you will show the identification, obviously. And this is how your speaking introduction will end up. After this will begin your speaking part 1, wherein Okay. they'll ask you random questions about anything and everything, like about yourself, about your home, about your hobbies, about what you do in your weekend time, about what you do when you're getting bored, about the time when you get angry. List is endless. तो Okay. nothing much to prepare, लेकिन बिल्कुल natural होके answers देंगे आप. Okay, ma'am. Right? Do you live in a small town or a big city? Actually, I live in a small town, but I have all the facilities which is required for a person to survive. I have transport facilities and educational facilities in my hometown as well. Would you like to move to another city or place in future? I think every person want a success in its life, and I also want the same. If I ever get a chance, I would love to move to any other city. Okay. आपने it word use किया है human beings के लिए जो गलत है. अभी आपने Yes, use ma'am. किया, वो गलत था. What Yes, can ma'am. people do for fun there? Actually, people can do a lot of activities, like they can go for shopping, they can go for movie and creative activities as well. What kind of clothes do you like to wear? Actually, it depends on my mood. Sometimes I like to wear casual clothes, and sometimes I prefer to wear traditional clothes occasionally, like birthdays or anniversaries of parties. How often do you go shopping for clothes? Actually, I am fond of shopping, and I love to shop approximately once in a week. Okay. Do you prefer to shop for clothes alone or with someone? Actually, it is very difficult for me to choose by my own.
I prefer to shop. I prefer to shop with my husband as well because he knows the taste and he can guide me as well. All right. Is it important for you to stay healthy? Sorry. Is it important for you to stay healthy? I think it is very important for every person and including me because nowadays people are very busy with the hectic schedule. So to stay healthy, we have to eat the right amount of food, which can make us healthy. All right. Are you healthier now than when you were a child? I think I was much healthier when I was a child because at that time my mom generally gives me homemade food, but nowadays I am quite busy with my schedule, so I prefer sometimes quick food, which is obviously dangerous to my health. All right. Uh, all right, fine. This is it till here. That is your introductory part. I'm satisfied as an examiner. I'm satisfied and I'm giving you a green signal for Q card. Q card you have already attempted, Yes, ma'am. right? I'm going to go further for a follow-up question. Now, follow-up question can be any random questions or follow-up questions can be from the Q card. तो क्यू कार्ड के भी हो सकते हैं और रैंडम भी हो सकते हैं, तो इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि अरे ये तो क्यू कार्ड से मैच ही नहीं कर रहा था फिर भी क्यों पूछा, Okay, तो पूछ ma'am. सकते हैं, राइट? Okay. लाइक योर क्यू Yes, कार्ड ma'am. वाज अबाउट Was about place. द प्लेस, राइट? और अगर मैं आपसे पूछूंगी तो आई मे आस्क यू अबाउट डिस्क्राइब अ मूवी दैट यू एंजॉयड अ लॉट. Okay. अभी आपका जो स्पीकिंग पार्ट 3 है ना, वो आपका समवेयर अराउंड 3 to 4 lines answer perfectly fine, right? Okay, ma'am. 20 to 30 seconds, okay. Okay. Yes dear, describe a movie that you enjoyed. Actually, I like Punjabi movies because these sort of movies we can see with the family. In Punjabi movies, the warmth of relationships can be seen, and and it can also attach you with your traditional and heritage as well. All right, how important is the job satisfaction for you? I think it is very important because if person is not satisfied with his work, then it would be very difficult to work on that part. I think work satisfaction is more important than anything else. Will it be possible to prevent environmental damage in your country? I think it is pretty much possible, but I think government and people should come forward to mitigate the environment problem because nowadays traffic congestion are increasing day by day, and people are not aware about the environmental pollution. They're still using plastic bags and all. I think it is the responsibility both human and government to eradicate the problem. Citizens, human नहीं, citizens and Okay. the government. अनुपम, Okay. यहाँ पे एक गलती करी है, यहाँ पे environmental hazards के बारे में सबको ही पता है, but कर क्या रहे हैं? We are not ignorant, we are just ignoring Okay. the repercussions. We are just Okay. ignoring the repercussions, right? Okay, could I repeat this question? जैसे आपने मुझे मेरी mistake बताई उसको मैं rectify करके बताऊं? No, it's okay. It's perfectly fine. The point is that you should take the point well taken, right? अभी यहाँ पे I'll like to end up our session of speaking. You did well. Prompt answers थे, कोई दिक्कत नहीं थी, but there are a few things that I'd like to share with you. Yes. अगर examiner आप जैसे अगर हम introductory answers है वो मैंने आपको बता दिया कि बहुत ही quick और prompt होने चाहिए, और आपने उसमें कोई भी बहुत demographical explanations नहीं देनी है जब भी आपसे वो आपके बारे में पूछे, क्योंकि उनकी हम assessment वहां पे वो लोग नहीं करते हैं. उसके बाद save your energy for the questions they'll be assessing,
राइट तो अभी स्पीकिंग पार्ट 1 में जैसे वो शुरू करते हैं दैट ऑल राइट नाउ आई बिगिन अप विद द इंट्रोडक्टरी सेशन। तो इंट्रोडक्टरी सेशन में हर क्वेश्चन जो है वो आप 2 से 3 लाइंस का दीजिए, सफिशिएंटली इनफ है। थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ओके मतलब मैम। एंडलेस एक्सप्लेनेशन नहीं जानी चाहिए, ओके क्योंकि फिर वो टोक देंगे और टोकेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस शायद कहीं ना कहीं शेक करेगा कि पता नहीं क्यों टोक दिया इन्होंने, क्यों, बिल्कुल मैम। है ना। सेकेंडली, हाँ जी। अगर कहीं क्यू कार्ड करते हुए, क्यू कार्ड अटेम्प्ट करते हुए एंड अदरवाइज ऑल्सो कोई ऐसा ऐसी बात है कि एग्जामिनर आपसे कहते हैं काइंडली लिसन टू द क्वेश्चन अगेन, या फिर कहते हैं काइंडली रीड योर क्यू कार्ड अगेन, इसका मतलब ये है कि आप आंसर गलत दे रहे हो। ओके मतलब वो ऐसे नहीं है कि वो कहेंगे अच्छा ठीक है भैया मुझे क्या दे रहे हो गलत, तो तुम्हारी गलती है, तुम्हारा एग्जाम, वो ऐसे नहीं करेंगे। ओके मैम। They are very, very humble people. They'll stop you. They will like you to change. They'll like you to see the cue card again. So as very, informatively, you should give the answer. ओके मैम। तो उसमें कॉन्फिडेंस लूज करने जैसा कुछ नहीं है। अगर वो हेल्प कर रहे हैं, टेक द हेल्प। कहीं पे आपको ऐसा लगता है बिकॉज ऑफ देयर एक्सेंट you could not understand what they had asked. 0.1%, if you couldn't understand what they had asked, you have all the liberty to ask them. बहुत बार भी नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं कि हर क्वेश्चन के बाद ही बोल दें कि सर प्लीज एक्सक्यूज मी आई कुडंट अंडरस्टैंड दैट, ऐसा भी नहीं। बट कोशिश करो, कहीं पे भी अगर आप फंबल कर रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आया क्वेश्चन, या कोई इतना टिपिकल स्लैंग या कोई वोकैब बोला है कि आपको नहीं समझ में आया, तो यू हैव लिबर्टी टू आस्क। ओके मैम। once or twice in between, totally acceptable. उससे ज्यादा obviously they'll think that what has happened, like are you not a comfortable speaker and listener, right? ओके इसके बाद मेरे को आपको एक बात बतानी थी that there are certain times जब हम बहुत भारी भरकम words use करने की कोशिश करते हैं, तो मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो मिस्टेक्स हो जाती है। तो कोशिश करो कि करने हैं तो आपको समझ होनी चाहिए कि आप कहाँ कर रहे हैं। ओके मैम। And then there might be certain questions जैसे will you like to be called as Martian? If I ask you as an examiner, if I ask you this question, will you like to be called as a Martian? क्या आंसर होगा? I don't think so. Why not? Why not? No अभी idea. ऐसे ऐसे वाले क्वेश्चंस में ना प्रिया मैम, जहाँ पे क्योंकि हमने ऐसे कभी सोचा ही नहीं कि मार्स पे, जैसे इंडिया में रहते इंडियन हो गया, मार्स पे रहते तो मार्शियन हो गया, है ना। तो अब यहाँ पे ये बात है कि क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं है, तो वी कैन बाय सम टाइम फ्रॉम देम by using these words in between, like so I'm sorry, I really had never given it a thought before, but now when you're asking me, I think I should rather give it a thought. अभी इतना slow motion में जब आप एक बात को बोल रहे हैं, what are you doing? You're buying time from them. Okay. एंड मीनवाइल बैक ऑफ माइंड पे आपको उसका आंसर भी प्रिपेयर करना है। हम क्या कर रहे हैं, हम उन्हें डाइवर्ट कर रहे हैं, हम उनसे टाइम तो ले ही रहे हैं, दूसरी तरफ बैक ऑफ माइंड पे हम अपना आंसर भी प्रिपेयर कर रहे हैं कि मैंने इसका क्या जवाब देना है। Okay, ma'am. राइट, दिस इज जस्ट अ स्ट्रेटेजी। उनको भी पता है आप क्या कर रहे हो, दे आर नॉट किड्स, लाइक इट्स बीन एजेस दे आर डूइंग इट, बट दिस इज टोटली एक्सेप्टेबल। फिक्स इट अप। अगर कहीं कोई गलती हो जाती है इन बिटवीन, कोई रॉन्ग यूज ऑफ टेंस हो जाता है, तो यू आर अलाउड टू फिक्स इट अप, राइट। Okay. डोंट यूज टू मच ऑफ फ्रेजेस एंड idioms बिकॉज इट्स अ क्लीशे। उनको लगता है कि ये तो रोट लर्निंग है, ये तो रटी रटाई लाइन्स है, रटे रटाई वर्ड्स है, यही यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से क्रैम किया हुआ कंटेंट है। और जैसे उनको लगेगा कि क्रैम किया हुआ है, वो क्वेश्चन चेंज कर देंगे, डाइवर्ट कर देंगे क्वेश्चन को। Okay, तो ये इंप्रेशन देना ही नहीं है कहीं पे भी कि हमारा कुछ भी okay, ma'am. cramped है, right? Rest everything's good. If I have to assess you, I'll be assessing 7 for today. Okay. Could have been Okay. better for sure, but I'm giving you 7. And all the best for your exam tomorrow. Thank you so much, ma'am. Any time.
Excuse me, ma'am. Yes, dear. मैम मुझे जो पार्ट 1 के क्वेश्चंस है एक्चुअली आई हैव पीडीएफ जो आई थिंक आपने भेजी है तो जी। मैम उसके जो पार्ट 1 के क्वेश्चंस है उसको एक बार मैं गो थ्रू कर लूं जस्ट टू टेक एन जनरल आइडिया I'm sending you a bit more in the group. ओके मैम Okay, dear. Then all the best. Take care. Bye bye. God bless. थैंक यू मैम थैंक यू सो मच मैम थैंक्स अ लॉट Anytime. God bless. Yeah. Do let me know how and how things end up. Right? ओके श्योर मैम श्योर Yeah. डेफिनेटली Okay, dear. Bye bye.